Hey everyone, welcome Tejasvi and Karishma from CSAI branch who have received on-campus internship in LinkedIn. So guys, let's start with your introduction. Okay. So am I going first then? Okay. So hello everyone. I am Tejasvi. Thank you, Pasna, for inviting me. And I'm the upcoming SWA intern at LinkedIn. I am third year student and I am basically pursuing my BTech in computer science with artificial intelligence. Over to Karishma. First of all, thank you, Pasna, for having us here. Hi, everyone. Myself, Karishma Jain, and I'm the final year student from CSAI. And as Upasna told, I'm upcoming software engineer intern at LinkedIn. Okay guys, so what was the eligibility for you? Okay. So, since this was an on campus opportunity, the eligibility criteria was on the basis of what the TNP basically email reads out to us. So, I will be like just giving you pointers about the TNP eligibility criteria. So, it there wasn't any cutoff on CGPA, so it was open to all on the basis of CGPA. And if we talk about backlogs, active backlogs were not allowed. Apart from it, basically the normal backlogs that the cleared backlogs they were allowed. So and apart from it, it was open to all branches. So there wasn't any strict eligibility criteria as we can see since all the CGPAs and all the branches were allowed. Okay, my next question is what motivated you guys to pursue an internship and how did you decide on your desired field or industry? Uh, Karishma, would you like to take this? Okay, so for me, okay, so for me, my main motivation was for the fact that, for an example, LinkedIn is an app that we use daily. Like we wake up with scrolling up the LinkedIn pages and all, and so my main motivation lies behind the fact that okay, I want to contribute to to a thing that is in real life, and users are daily making use of it. Like it is like directly connected with the end users, and we are getting benefited from it every day. Here we are searching for our jobs or our connections and everything, and I want to make contribution to such a platform. Like it was like giving back to from where I have received. I would say similar to my case because I uh, would love to say here that manifestations do come true. You won't see me active on any of the social media platform except for LinkedIn. My screen time, whatever it is on phone, is mostly because of LinkedIn. So I have a deep connection with LinkedIn as a company, and here I am today as the intern. I mean, upcoming intern. So this is it. My next question is what resources or platforms you find most useful, helpful in searching for the internships and also the resources you use for the preparation. Upasna, before Karishma Okay, so addresses for this search. question, can we skip to the roadmap thing here because it was like more Yeah, like yeah, yeah. beneficial for the students also to understand the process. So Yeah. let's just come to the resources of preparation being addressed by Karishma. Okay, so for the resources, I'll say I firstly enrolled in a paid courses that helped me to gain a foundational knowledge of each and every data structures, the functions involved with that particular data structure, the syntax, and etc. Then I gradually moved on solving questions upon each data structure that helped me to understand the uses of how to use those functions, those syntaxes, etc. And then gradually I moved upon after covering up all the data structure, I moved upon solving the SDE sheet, because I moved after knowing all the data structures. Because for an example, if you are solving a question of array from a SDE sheet, now you know that this you have a basic idea of all the data structures that exist, and now
can think of, okay, that this question can be solved with the help of two pointers or a hash map or something. So it also gave me exposure to solve a particular question with different data structures and different approaches. uh, then I used to do lead code every day and problem of day on GFG2. So this also helped me to build a good coding profile that could be added to my resume and other way to promote. Yeah. Uh, yes, I completely agree. Adding on to it, I would just say that coming to the SD sheets, you can follow any SD sheet that you trust. It is not that there is like a concept. What do you say? Exhaustive list of problems that you must solve. It is just that you need to search for a list that basically covers all the important topics. I mean, this lists can be of, like, for example, the Love Babar SD sheet, anything. It can be of Striver as well. So it depends upon like your current preparation and what you feel is best for you. Adding on one more line, it is not about that you have to solve multiple sheets. You can stick to one sheet, always try to complete it. Another thing is this, it is not that you have to tick all the questions of the sheet. Main focus should be on understanding the intuition behind putting that question in the sheet. Like it's one of the most important question, that why or it may be teaching you some important skill, that is why it is there. So focus upon that instead of number of questions and number of sheets. Okay, so Next was the tips on the resume. yeah. So, talking about LinkedIn in specific, there wasn't any resume shortlisting criteria, but definitely resumes extensively in, discussed in the HR rounds of interviews. So, Karishma will be giving you insights about. Yeah. Few important things that I feel is, first of all, is second years. Most of the second years they do not have a good industrial experience, right? So more of the focus of the HR or the person who is going to shortlist your resume shifts on the fact that what projects you have made and what skills you possess, right? So be very clear with the fact that you list up your projects very well. Make it ATS friendly for, because like by adding action verbs, by adding numerical figures to tell about the impact or say the accuracy rates. Okay, next thing is to put up the links of the project certificates of like your internship or any achievement or research paper, whatever you are doing. You should, if you have, try to put your deployed link or GitHub repo link, whatever you can do best to represent it. Another thing is skill section. It is very important. Like, be aware of few things. First is, whatever you are writing, be very sure that you know it, because there will be certain rounds in which interviewer can ask you about those stuffs. So just don't write to fill up the resume. Be very sure of what you are writing, because you are going to be questioned upon that. Another thing is, like, if you feel that your skill section is like a bit of incomplete, please, like, you have few months, 4 to 5 months with you, work upon that so that you can add relevant skills there, because it's a very important section. Another thing that I feel was very crucial for me was, I always took a resume review by my seniors or by my friends, and especially those who have already gone through all this process, because they know very well that what will make you stand out of the crowd, right? So my from whichever person I was taking the resume review, it really helped me a lot, because they know it better. Like, even the order in which you are putting up your stuffs, or what is more important, like, there are scenarios where you feel that you have lot of stuffs to put but there is no space. So you have to give priority to what you have to put. Plus,
Another thing is formatting. It is very important to make it look very professional, and there should be no grammatical errors, spelling errors, etc. Your all links should be working. Uh, a last point that I would like to add is, on the top of the resume, we always include our whether it is GitHub ID, LinkedIn IDs, or coding profile. So it should look presentable. Like for an example, I added my lead code profile on the top. So whenever the link was directing to my lead code profile, it should show my consistency, a good number of questions, a good number of participations in contests, etc. So yeah, be very careful about that. You have to give a proper format, no spelling errors, proper working links, and each project should definitely have a link where the reviewer, if he wants to see, he can see your work. That's all from my side. Wonderfully explained, Karishma. Almost covered everything. I would just like to add here that we also have a website called Taking Control, that is basically that basically helps people to get resume reviewal, and we also give one-on-one mentorship and mock interviews as well. So if anyone is interested, you can join our community. There are resources as well for your preparation that you may find helpful, apart from the coding contests and the opportunities being shared. So that is our community. Upasna, can I share the WhatsApp link to the community in the chat box if anyone wishes to join? Yeah, yeah, you can share. Okay, thank you. So this is the WhatsApp link of the community Taking Control. You can join it and it will definitely be of help. Coming to the next subheading, I guess it was how to solve the questions, right? Yes. Okay, so about solving questions, I believe that the key is consistency again, because you have to be consistent for at least about 5 months and more. At least I'm saying this in order to clear the OAs, बिकॉज उस टाइम पे जब प्रेशर आता है ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर अस, यू नो, आपको ऐसा लगेगा कि आपको तब कोड भी करना है, आप सोच भी रहे हो, तो फिर मतलब इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद योर लाइक प्रैक्टिस एंड यू नो द लर्निंग अप्रोचेस, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है. नाउ व्हाट कैन बी द सोल्यूशन टू इट? आई वुड से कि जितना ज़्यादा कॉन्टेस्ट दे सकते हो ना, डू दैट. There are contests being organized on lead code. We all know that bi-weekly contest होते हैं वहाँ पे Saturdays को from 8 to 9:30. There are contests on lead code on Sunday. Sunday it is 8 o'clock in the morning to 9:30. तो जो भी दिन आपको सूट करता है, just pick up a day. For me it was Sunday. मैं Sunday को देती थी contest from 8 in the morning to 9:30. आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, डोंट गेट डिसहार्टेंड. इट इज पार्ट ऑफ द जर्नी, बिकॉज nobody you know is a born coder. मतलब हम सब इवॉल्व कर रहे हैं, हम सब लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नी. तो फिर कॉन्टेस्ट में अगर आपसे एक हो रहा है, दो हो रहे हैं, तीन हो रहे हैं, देन यू आर डूइंग वंडरफुली वेल. Three and more should be the target, ultimate target, but two is also decent, but try to solve more than one. So contest regularly if you are giving. So it basically gives you a hands-on experience of an OA environment. So that is recommended, and being consistent with your everyday coding practice, at least solving 2-3 questions. 2-3 questions. So I am saying at your end you must be solving more than 5 questions by now, I guess. So that question criteria should be increasing day by day. So that is from my side. Karishma, would you like to add something? Yeah, sure. Okay. Few mistakes which I noticed, which my mini knowns did, was they were not maintaining their notes. देखो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को किसी लिंक पे सॉल्व कर रहे हो, इट्स ओके, इट्स गुड, बट एट दी एंड जब आपको रिवाइज करना होगा, आप वो हंड्रेड्स ऑफ लिंक्स पे विजिट नहीं कर सकते आपको. एंड वन मोर थिंग इज कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं, रेंजिंग फ्रॉम n स्क्वायर टू कमिंग डाउन टू अ गुड कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. एंड कुछ algorithms होंगी या फिर certain stuff like that. You should maintain a proper notes for that, and it's really very important.
पर्सनली न्यू फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने दे वर लाइक अब हमने इतने सारे सॉल्व तो किए बट हमें कुछ याद नहीं आ रहा. इट्स जस्ट लाइक जे कि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे ना, इट इज नॉट mugging up those questions, but it is very necessary to revise. तो एक proper notes maintain करना is good. I won't say कि it should be handwritten. I personally made on Word doc, but whatever you feel you should do. Another thing is कि हमें लगता है कि हमें क्वेश्चन आ गया, बट समटाइम्स लाइक सूडो कोड देख के हमें लग रहा है कि ठीक है हमें आ गया, एंड यू मूव ऑन टू द न्यू क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं करना चाहिए. लाइक जब तक उसको पूरा प्रॉपरली कोड नहीं करोगे ना, वो छोटी छोटी चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, वो नहीं समझ में आएगी. प्लस प्रैक्टिस नहीं होएगी तो टाइम, जब ओएस में या फिर इंटरव्यू में जब टाइम एक कंस्ट्रेंट होगा ना, तब वो चीज नहीं सॉल्व होएगी. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आज आप एक कोई क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें कोई न्यू टेक्निक आई, फॉर एन एग्जाम्पल टू सम कर रहे हो, अभी नहीं सोचा था कि वो टू पॉइंटर्स तो हो सकते, एक न्यू टेक्निक आपके लिए आई, राइट? जस्ट मार्क इट डाउन. ओके, सो ताकि 2-3 दिन के बाद रिविजिट करो उस क्वेश्चन को, एंड यू हैव अ मतलब वापस एक रिवीजन हो जाए कि ठीक है ये क्वेश्चन ऐसे भी तो सॉल्व हो सकता था, सो दैट यू कैन यूज दिस इन वट एवर क्वेश्चन यू फील. सो या दिस वॉज फ्रॉम माई साइड. Okay. Then next was Upasna. Your interview experience. Yeah, thank you. Uh, what other language you were proficient in? See, talking about LinkedIn in specific, it was open to languages Java, C++, C hash, and C that they have mentioned in the criteria. But matlab, there is no barrier on language. Talking about me, I do coding in Java. I have basic understanding of C++, except for the pointer thing. I don't know about that. And Python. So these are the languages. Karishma? No, very. Yeah, same goes for me. I code in Java, but I have basic idea of Python. But again, I'll say it is not a barrier. Like if you know one language, you can definitely switch to other if it is needed. Main thing is concept. So yeah. Uh, okay, so interview experience and resources. Are we doing resources first, Karishma? Interview resources first? Let's do Okay. experience first. Let's do experience first. No, because we'll discuss Okay. the experience first and then we'll share the resources. So I think that would be good. Um, Interview experience for LinkedIn, it was two interviews. One was technical and the second one was hiring manager round. So the first interview, the technical interview, was completely TSA based, and it was 45 minutes long, but it stretched for about an hour for me. Um, Basically, so the how this technical interview goes is that the first, basically, there's interview wali cheez ki introduce yourself, and you get introduced to your interviewer. Uske baad they directly jump to the questions. So in my case, the questions were the first set of questions was based on arrays and basically union intersection, and there were he was basically, my interviewer was basically making small edits in the question and basically was changing questions, and I have to change my code accordingly. So it was like impromptu change in the question, and I was coding. And the second question was dp based, dp on subsequence and substrings. So it was about the DSA round being discussed. So why it stretched for 1 hour was because of technical issues at my end. So make sure you have like a good and stable internet connection and everything. ये सब beforehand check कर लेना. Again मैंने भी करा था अपने end पे, but वही last minute में ऐसे कुछ समझ नहीं आता है. So just a reminder कि make sure you have good internet connection and your everything, mic and everything is working fine. um my interviewer was, he was really good, so it is not intimidating at all. Of course I would say कि जो first 5 minutes, 5 to 10 minutes होते हैं ना इंटरव्यू के, you will feel कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, मतलब वो क्वेश्चन बताएंगे अभी और क्या हमें आएगा या नहीं, आप सेल्फ डाउट वाली स्टेट में जाओगे, नो डाउट.
बट मतलब वो आपको फर्स्ट 5 से 10 मिनट्स सर्वाइव करने हैं, और यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन. अगर आपने वो फर्स्ट से 5-10 मिनट सर्वाइव कर लिया, यू इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, इफ यू आर कन्वेइंग योर आइडियाज, और मतलब आप कर पा रहे हो, तो यू आर डूइंग रियली वेल. उसके बाद द रिजल्ट विल डेफिनेटली बी इन योर favor. So it was about the technical interview for me. Then comes the hiring manager round. Within 15 minutes, we got the next mail for those who got shortlisted about the hiring manager round. Then again, my manager, the hiring manager, basically the one which I got, he was extremely talented, and he was basically from a US based LinkedIn team. So he was very kind and patient, and he was hearing out to my ideas, and we were basically, it was a discussion sort of an interview, wherein what he did, since I am interviewing for LinkedIn now, so what he did, he opened my LinkedIn profile. He didn't look at the resume. उन्होंने क्या करा कि he opened my LinkedIn profile and he said कि wow, you have maintained your LinkedIn profile so well. And उसके बाद he just started discussing every like experience that I've added there, every projects that have been included, and he also like drifted to the GitHub links that I mentioned. So since it was LinkedIn as a company, तो again resume पे वहाँ पे कम focus था, because LinkedIn itself is like a bigger resume. So यहाँ पर ना what happens in hiring manager round is that it again varies from like person to person or candidate to candidate. It would definitely be different in case of Karishma. But for me, my projects were discussed. The top project that I mentioned was my hackathon winning project, rather our hackathon winning project, because Karishma and me, we were in the same team. So we discussed that project, and he basically asked questions related to the tech stack used, how I basically implemented this particular feature, and what does this project actually do. So you have to be like thorough about the things or the projects that we've been mentioning in your resume, or be it on your LinkedIn. So we did that. After that, we basically discussed about my leadership positions. So I am also like an active participant of Rotaract Club. So we had a complete different discussion about co-curricular activities that are happening in school. I mean, sorry, in college. Then this was it. And apart from it, then basic HR management round question. What are your weaknesses? What are your strengths? So you have to prepare them before in hand, because वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो आपको ऐसे बोल दिया कि what are your weaknesses, और आप तभी वहाँ पे बैठ के सोच रहे हो, और आप कुछ नहीं बना पा रहे हो, ब्लैंक हो गए हो. तो इस सब से बेटर है कि you prepare all these things before in hand. So yes, after this interview, within 3-4 hours, we got the mail of selection. This was my interview experience. Over to Karishma. Okay, so coming to me, I'll start with OA round. So OA round, it was of 90 minutes. Okay, we will answer all the questions that you have at the end. Okay, okay. So starting with the OA round. OA round was of 90 minutes. It had three questions. I'll say medium to hard level questions were there, and I guess the platform was HackerRank. Um, it had one question of graph, one question of string, and another question of arrays or binary tree something. Okay, and if I tell you the cutoff was who solved all the three questions. Okay, so it is like you have to maintain that speed that you can solve all those three questions and in a best time complexity. Okay, now coming on to the interview, first round was technical interview. It was definitely entire DSA based and मेरे साथ भी यही हुआ some issues were there but I'll say one thing, the people, the interviewers are so kind and they literally understand all these things. I was initially like very afraid that my first impression like it has destroyed my first impression or something, but they were like they made me calm and then we started and I had I'll say two to three questions because on each questions there were some follow up questions. Okay, so like my first question was DP on array. So after asking suppose that question, they followed up with questions like what if the array is sorted, no need to go in this. Then I told them that okay, we can keep a checker to do this and so on. And my next question was
on binary trees. And one thing that I would like to add here is कि पूरा कोड लिखने की प्रैक्टिस रखना, बिकॉज क्या हुआ, उन्होंने पूरा ब्लैंक एडिटर दे दिया मेरे को एंड शी सेड योर अप्रोच इज गुड, नाउ स्टार्ट कोडिंग. एंड आई वाज लाइक, ये तो पूरा ब्लैंक है इसमें. आई वॉज इन अ शॉक कि ओ शिट, आई हैव टू मेक नोट क्लास, आई हैव टू मेक मेन क्लास. एंड इन दैट शी ऑल्सो ड्रू अ बिग बाइनरी ट्री एंड शी सेड इस पे ड्राई रन करके, इसको रन करके दिखाना. सो आई एम कनेक्टिंग दी parent node, left child, right child, and so on. And you know what? We have the practice of doing questions on LeetCode and PFC where node class is already implemented by default, right? So after a so long time, I was making node class as constructor. I got fumbled for a minute, and then I realized, okay, I can do this. Okay, and again, there were follow-up questions on binary trees also, that what if it is a left skewed binary tree or right skewed binary tree? What will be what you will do? Another thing is, उनके पूछने से पहले ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता देना. इट इज लाइक अ गुड इम्प्रेशन. फ्यू मोर टिप्स दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज कि स्टार्ट करो. अगर सपोज करो देखा हुआ क्वेश्चन आपको पता है, फॉर एन एग्जाम्पल टू सम आ गया, आपको पता है कि यार टू पॉइंटर से ज़्यादा इजली सॉल्व होएगा, बट आई विल से इट इज गुड टू स्टार्ट फ्रॉम एन स्क्वायर, मतलब सबसे वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से स्टार्ट करना. बिकॉज इंटरव्यूअर को ये नहीं लगना चाहिए कि आपको आता है, मगअप कर कर आए हो और आपसे, because they want to see your problem solving ability, right? So moving on from n square to n like this, तो ये अप्रोच मेरा हर उसमें था. फॉर एन एग्जाम्पल एरे वाला क्वेश्चन था तो आई स्टार्टेड विद एन स्क्वायर एंड देन आई टोल्ड कि नहीं हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बिकॉज ये केसेस ओवरलैप कर रहे हैं वगैरह वगैरह. तो अनदर थिंग इज बोलते रहो कि हम कितना भी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का सॉल्यूशन हो, बोलते रहो कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम ये लूप चला सकते हैं. कहीं रॉन्ग भी जाओगे दिल गिव अ हिंट टू यू. ओके, मूविंग ऑन टू एचआर राउंड. आई डोंट नो व्हाई बट मेरा ये पूरा टेक्निकल राउंड ही था ऐसा लगा मुझे. आई विल से कि हाँ, इट वाज अ डिस्कशन बेस्ड, बट he literally opened my resume and on the top of my resume was my CGPA, and he asked, okay, your CGPA is good. So what are your favorite subjects? So I answered something, and then uh, you have to be very wise. Whatever you are answering, he will pick up the next question from that only. So I said, oops. So he asked something from me from oops. And then next section was my skill, and that I mentioned Java and Python. So he asked a question about that, and moving upon, he came to project. So he was very inquisitive about. They were like, he wanted to know what features I did implement in this, and he also asked me that is it a live project? Like, is it serving someone, or is it helpful for someone, or you have just meet like this? So our project was actually helping a good cause. So I explained him that, for which he was like very excited. And another was my another game was my leadership part, that actually I was a owner of a startup of IIT that was funded by IIT Delhi. So he was very inquisitive about to know about more about that. He went upon us, and each and every question of mine was technical only. Why you are using this thing? Why not this? Why is this more helpful? Why Java? Why Python? So for me, it was more on whatever thing I have mentioned in my resume. He was picking up next questions based upon that. So that is why I say that जो भी लिख रहे हो resume में सोच समझ के लिखना. भरने के लिए लिखोगे तो वो वहीं पे समझ जाएगा कि you have just written like that. And yeah, then within 1 2 hours, we got our result with our names in the green box. And I still could not believe it is my name. And I was calling my friends, is it me only? So yeah. I would love to like re-repeat what she said about the speaking out loud technique in interviews because it helps a lot. देखो whenever you get the question ना, and if you feel, अगर आपको ये भी लग रहा है कि आपको नहीं आता है ये question बिल्कुल भी, but you are like interpreting it within your mind, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, just try to frame it
एंड स्पीक आउट टू द इंटरव्यूअर. एक बार अपनी अप्रोच बताओ उनको कि सर दिस इज समथिंग दैट इज कमिंग अप टू माई माइंड एंड this is what I'm presently thinking of, though it might not be like the very good solution to it, but this is what that comes to my mind. अगर आपका आइडिया बिल्कुल डिफ्लेक्टेड होगा टू द सॉल्यूशन तो वो आपको पहले ही बता देंगे. फिर ऐसे में आपका भी टाइम सेव होगा कि आप गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो एंड देन यू आर बेसिकली स्पॉइलिंग योर इंटरव्यू. इसलिए जस्ट स्पीक आउट व्हाट यू फील इज करेक्ट एट द मोमेंट. अगर मतलब ऑब्वियसली जैसे क्वेश्चन आया उसके बाद तो हम कोई भी नहीं बोल सकता है ना, मतलब टेक योर टाइम, टेक 2 to 3 minutes, 2 3 4 मैक्स 5 minutes, बट 5 minutes के बाद जस्ट स्पीक व्हाट कम्स टू योर माइंड. चुप मत बैठना. मतलब दिस इज व्हाट हैव बीन द लर्निंग अबाउट द एक्सपीरियंसेस सो फार इन द इंटरव्यूज. Also they give hints. They're like बुरे नहीं होते, Yes, बताते yes. रहते बीच में कि you can do this, you can do this. So okay. But if you don't speak up, then it's neither going to help you nor them. So yeah. सबका इंटरव्यू जनरली सेम ही जाता है, लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन वाली चीज़. Yes. Interview resources now. So basically, what we did, I'm sorry, what I did in my opinion, it was like once I got the selection mail of OA, I quickly opened the GFG resources. We all know कि वहाँ पे बहुत अच्छे interviews experience के blogs डले हुए हैं. Just read कि हाउ इज द पैटर्न देयर, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या व्हाट शुड बी. क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको पता चलता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू क्लियर्ड द ओए और उसके बाद विद इन नेक्स्ट डे, मतलब मैक्स परसों, मतलब आज इंटरव्यू आप मतलब ओए क्लियर हुआ फिर परसों आपका इंटरव्यू है, तो यू बेयरली गेट अ डे टू प्रिपेयर. तो ऐसे में व्हाट वी डिड वाज आई बेसिकली ब्राउज द आर्टिकल्स ऑफ जीएफजी. वो जो नोट्स में पहले हमने अंडरलाइन करे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो हमें रिविजिट करने थे वो वाले क्वेश्चंस देख लेना, या फिर पास्ट वीडियोस भी होती है यूट्यूब पे अबाउट द एक्सपीरियंसेस, वही वही सब बेसिक चीज़ें देखना अबाउट बिफोर इंटरव्यू. अगेन बट ऑब्वियसली ये हम तब कर पा रहे हैं जब वी हैव ऑलरेडी गिवन मॉक इंटरव्यूज in the preparation. तो mock interviews plays a very important role in the preparation because अगर आप किसी को पहले दे चुके हो, you've been through that phase, तो आपको फिर मेन इंटरव्यू पे इतना डर नहीं लगेगा. You will definitely do best. तो I would say mock interviews are really very important to give before you actually face an interview. I totally agree with this. मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब एक ना वो डर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई आपके सर के ऊपर बैठा है एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन राइट नाउ. तो वो पूरा फियर तभी जाता है जब यू गिव अ मॉक इंटरव्यू. एंड आई ऑलवेज मेड इट अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ कि मुझे मॉक इंटरव्यूज हमेशा देने हैं. एंड वो जो बोलते रहो आसान लग रहा है ना अभी, लेकिन होता नहीं है. ठीक है, तो वो चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगी. अनदर तो एंड मोस्टली मिस्टेक्स भी उन्हीं उसी से पता चलती है राइट. अगर आप किसी भी ऐसे सीनियर को या फिर ऐसे किसी भी इंसान को अपना मॉक इंटरव्यू दे रहे हो जो इन सब प्रोसेस से ऑलरेडी गया है, वो पक्का कोई ना कोई ऐसी टिप या ऐसी कोई मिस्टेक हमें बताएगा जो हमें लगता है नहीं है बट एक्चुअली में है. एंड इट लिटरली हेल्प मी अ लॉट बिकॉज मेरा बाइनरी ट्री का क्वेश्चन गलत जा रहा था बिकॉज आई कनेक्टेड दी लेफ्ट चाइल्ड टू द राइट वन एंड राइट टू द लेफ्ट वन. माई आंसर वॉज कमिंग रॉन्ग एंड बट द वे आई गॉट दिस फीडबैक कि मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया एंड which actually depicted my problem solving skill, like that we will go to the left or we will go to the right, whatever I was speaking. So this all were the practices that I did with the help of the mock interviews. Another thing is कि सीनियर से कनेक्ट करना कि बिकॉज दे न्यू कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी लिटरली गॉट द ईमेल एट द इवनिंग दैट टुमारो वी हैव आवर इंटरव्यूज. तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा हर चीज़ के लिए. तो वेदर इट इज़ योर इंट्रोडक्शन और आस्किंग अ क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू फ्रॉम द इंटरव्यूअर बिकॉज इट इज़ another important thing that you should do. तो पहले से प्रिपरेशन रखना एंड सीनियर्स से कनेक्ट रखना इस चीज. फॉर एन एग्जांपल आई कनेक्टेड थ्रू लिंक्डइन टू अ लिंक्डइन इंटर्न की व्हाट वर द डेटा स्ट्रक्चर्स दे आस्क्ड यू या फिर क्या इंपॉर्टेंट स्टफ्स थे जो. सो आई गॉट अ आइडिया.
So yeah, and yeah, reading the articles on interview bit और seeing the question wise tag होते हैं ना, तो उससे भी कि हाँ ये क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में पूछे गए थे, या फिर लीड कोड का जो डिस्कशन सेक्शन होता है उसमें भी बहुत लोग अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस पोस्ट करते हैं, तो रीडिंग दैट। एंड एक और चीज होती है कि अगर लिंक्डइन हमारे कैंपस में ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई है, तो कुछ टाइम पहले किसी ना किसी कॉलेज में गई होगी, तो मोस्टली on Telegram groups and all, you get to know ki okay, they were asking this or that. So yeah, making a connection, following up the resources, and being prepared with whatever you have written. My next question is, what are the do's and don'ts we need to follow? I guess we have covered over like them over the previous discussions, but definitely we would love to relist them. So the first takeaway is that you have to believe in your potential and be very confident. Although अभी ऐसा sound कर रहा होगा कि कहना आसान है, I know, but we have been through that phase. But you have to believe in yourself. Something or the other is planned for everyone. तो मतलब ऐसा कोई डिसहार्टेंड वाली होने की बात नहीं है यहाँ पे। एंड सेकंड आई वुड से दैट प्लीज प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन बिफोर इन हैंड, एंड वो एचआर मैनेजमेंट मैनेजर वाली जो राउंड होता है उसकी चीज़ें होती है ना, अबाउट द बेसिक्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग, वो क्योंकि ये सब आप उस टाइम इम्प्रॉम्प्टू नहीं बोल सकते। एवरीवन विल, मतलब वी हैव टू एडमिट इट कि इंट्रोडक्शन आपको बोले अचानक से कि प्लीज अभी दे दो, फॉर एग्जांपल मैं किसी को भी बोल दूं यहाँ पे कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड दैट टू आप इतना लंबा सा नहीं बोल सकते हो इंट्रोडक्शन। इट हैव टू बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। अपनी मेन कंपनीज आने से पहले जस्ट गेट प्रिपेयर्ड विद द इंट्रोडक्शन, नॉट मोर देन 3 to 4 लाइन्स, जिसमें आप अपना बेसिकली अपना बेस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को और वो आपको याद है। इंट्रोडक्शन मतलब आपको मतलब पेपर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही कि आप यहाँ पे पेपर लगा रहे हो मैं कि लास्ट मिनट में उसको रेफर करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करी हूँ, नहीं। इतनी बार उसको देख लो, 3 4 लाइन ही है, बस याद कर लो, ताकि बिकॉज इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करोगे ना अपना किसी भी चीज जो इंटरव्यू में होगा, तो अगेन वो फर्स्ट इंप्रेशन होगा आपका। हम वी विल बी एड्रेसिंग इट इन द एंड। तो इंट्रोडक्शन, देन अगेन गुड इंटरनेट कनेक्शन, लाइक इन माय केस एंड एज वेल एज इन करिश्मास केस, हम दोनों का ही ना हेडफोन नहीं वर्क कर रहा था। तो मेरे वाले में फर्स्ट 5 मिनट्स आई वाज सेइंग कि एम आई ऑडिबल, ही वाज सेइंग एम आई ऑडिबल, और हम दोनों एम आई ऑडिबल कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स उससे 5 मिनट्स वेस्ट हुए, और उससे क्या होता है ना कि जो मतलब हमारा तो फर्स्ट टाइम मतलब है ना प्रॉपर इंटरव्यू टाइप्स वाला, तो उसमें मतलब ऑफ कोर्स मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि अब क्या होगा, बिकॉज़ मैंने इंटरव्यूअर के 5 मिनट वेस्ट कर दिए बिकॉज़ ऑफ माय हेलो एम आई ऑडिबल। तो ये वाली चीज़ पहले से टेस्ट कर लो। ऑफ कोर्स बट अगेन ही वाज़ वेरी हम्बल एंड नाइस, तो उसकी वज़ह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ही वाज़ वेरी गुड एट दैट। बट ये सब चीज़ें देख के रखना कि वो है क्या, गुड इंटरनेट कनेक्शन, माइक वगैरह सब वर्क कर रहा है ना। अ Is everything covered? नहीं, एक वो भी अगेन करिश्मा हैज वंडरफुली मेंशन्ड इट प्रीवियसली एज वेल, बट जो लास्ट में आप क्वेश्चंस पूछते हो इंटरव्यूअर से कि आर देयर एनी क्वेश्चंस फॉर मी, ही ऑलवेज आस्क्स यू इन द एंड, तो वो क्वेश्चंस भी आप पहले से प्रिपेयर करके जाओ कि of course company related this questions, they basically get tailored company to company, जिस भी आपका कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग या अपनी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये सब बदलते जाएंगे, बट द पॉइंट इज यू हैव टू प्रिपेयर देम बिफोर इन हैंड। आप बिकॉज थ्रू आउट द इंटरव्यू आप नहीं सोच रहे हो कि आपको क्या पूछना है एंड में, और बस आपको एंड में कुछ पूछना है, एंड मेक श्योर टू आस्क अ गुड क्वेश्चन एट द एंड बिकॉज इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट कि जाते एक तो होता है फर्स्ट इंप्रेशन, एक होता है लास्ट इंप्रेशन। आई वुड से बोथ मैटर्स, बस बीच में भी सभी मैटर करता है, बट इट इज लाइक कि फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन ये दोनों बहुत अच्छे से, मतलब बिकॉज ये दो चीजें हैं जो हमारे हाथ में है अभी एट द मोमेंट। Because last impression के बाद ही उसको साइन इन करना है कि हाँ, yes or no. हाँ, यस, यस, वो लास्ट क्वेश्चन के बाद वो आपको स्ट्राइक ऑफ करेंगे या फिर टिक मारेंगे। तो एक इम्पैक्टफुल लास्ट क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाओ, दैट वुड बी आवर एडवाइस। Okay, adding on few things.
पहला कि मेक श्योर यू आर ड्रेस्ड फॉर्मली, ठीक है। मीट में यू कैन जस्ट वियर द शर्ट, नो नीड ऑफ गोइंग फॉर द बॉटम वेयर, ओके, बट बी ड्रेस्ड अप फॉर्मली, check up your internet and everything. And third thing I'll go with technical round is कि पेन पेपर लेके बैठना, बिकॉज ट्राई रन करना है आपको, ठीक है। अपने में तो सोचोगे ना कि ये चीज़ ऐसे होगी या वॉट एवर, ठीक है। I was doing dry run on my notebook and the interviewer saw that and she was like, I am also interested in seeing what you are doing. So she gave me a whiteboard on the screen itself and she said, do dry run here. So अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं कर्सर से टू कैसे लिखूं, बहुत टाइम लग रहा था एंड आई वॉज रियली वेरी स्केयर्ड एट दैट टाइम, बट लेटर आई मतलब तो वो ड्राई रन की प्रैक्टिस, अपने साथ एक नोटबुक करके रखना, एंड अगेन आई रिपीट वन थिंग, प्रैक्टिस करके जाना। देखो, आपको कोई ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप्स आने वाली है तो आपको कॉलेज से आपको प्रिपरेटरी लीव्स मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो समर आपको बोलेंगे समर वेकेशन है, और जो समर वेकेशन स्टार्ट होगी ना उसका ऑलमोस्ट 1.5 महीना होगा स्टार्टिंग का, जो आपको लगेगा वाओ आपको टाइम मिल गया, बट नहीं, वो टाइम है ही नहीं। वो जैसे 1.5 महीना खत्म होगा ना, यू विल बी लाइक आपके पीछे इतनी सारी लाइन ऑफ कंपनीज वेट कर रही होंगी जो अचानक से आएंगी, तब आपको लगेगा कि आपके पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। तो इट इज दैट कि जो अभी का टाइम चल रहा है फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स टिल योर फर्स्ट कंपनी कम्स, इट्स अ वंडरफुल टाइम ऑफ प्रिपरेशन। दे दो अपने दिन को, कर लो डिवाइड कि यू आर गिविंग दिस 4 hours or 5 hours to coding, whatever is depending upon your capability. मैं डरा रही हूँ दैट यू हैव लेफ्ट 90 to 100 days to prepare for your DSA, अभी से कर ले बैंक जॉब। Yeah, but this is the bitter truth. Okay, so code time division B we have covered in it, so we are skipping this question. Your coding journey more and how to get last thing that I would like to add is कि क्वेश्चंस को कैसे करना था। आई फॉरगॉट टू टेल यू ऑल दोस पॉइंट्स कि स्टार्टिंग में हो सकता है क्वेश्चन को करने में 30 to 40 मिनट्स लग रहा है, ओके। 2 घंटे के बाद तो यार सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन नहीं देखना तो एटलीस्ट हिंट देख लो, या फिर कीप दैट क्वेश्चन टू विजिट ऑन आइदर आफ्टर 1 2 days, ओके। एंड अगर कोई क्वेश्चन है जो आपसे आज नहीं हो रहा तो प्लीज उसको मार्कअप करके रख लो, कुछ दिन के बाद वापस से रिविजिट करना, बिकॉज सर्टेन सेट्स ऑफ एल्गोरिदम ही है जो आपको समझनी है, सर्टेन सेट्स ऑफ टेक्निक्स ही हैं जो आपको समझनी है, एट द एंड वो पूरी कंपाइल्ड हो जाएगी। तो अभी अगर टाइम लग रहा है तो इट्स ओके, गिव दी टाइम। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन सिर्फ करने के लिए नहीं करने, नंबर्स बढ़ाने के लिए नहीं करने, इंट्यूशन समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेम क्वेश्चन जो तुम कर रहे हो, एग्जाम्स नहीं है कि जो क्वेश्चन तुमने किया उसी को न्यूमेरिकल फिगर्स बदल के आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इंट्यूशन जब तक नहीं समझोगे तो वहां जाके क्वेश्चंस नहीं होंगे। yeah, I completely agree with that.